Okay, so now we are on the second part of our discussion about how to prepare the cash flow statement. So what we have discussed so far, number one, the different types of the cash flows, and we understand that there are three types of cash flow: cash flow from the operating activities, investing activities, and the financing activities. We have also understood the rules with regard to the principles of effective cash flow management. Number one is cash flow from the operating activities must be positive and increasing. Cash flow from the investing activities, assuming that the market is in a good shape, economy is in a good shape, cash flow from the investing activities must be negative. And cash flow from the financing activities, depending on, again, economy is in a good shape and you are having a lot of expansion plan, then the cash flow from the financing activities must be positive. Okay. The second adjustment that you have to do is payment of dividend as the amount of profit after tax added to the reserves and surplus may be net of dividend payment. समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो आप सभी को मालूम है कि आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है ना, 20 करोड़ का प्रॉफिट आपने डिविडेंड करके दे दिया, आपके हाथ में कितना बचा? 80 करोड़. इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स और रिटेन्ड प्रॉफिट. तो ये रिटेन्ड अर्निंग और ये रिटेन्ड प्रॉफिट जो 80 करोड़ का है, ये बैलेंस शीट में कहाँ जाके बैठता है? इट सिट्स इन द बैलेंस शीट वेयर? रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट? सो ये जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके बैठता है. तो इसका सेकंड एडजस्टमेंट हमको क्या करने की जरूरत है कि अगर व्हाट वी हैव टू एंश्योर दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 100 करोड़, डिविडेंड पेड इज 20 करोड़, राइट? सो how much should go to the reserves and surplus? 80 crore. So that is what we have to ensure. So if you are taking, if you are starting, when you are making the cash flow and your starting figure is profit after tax minus dividend, तो फिर आपको dividend को minus करने की जरूरत नहीं है. But if you are starting with PAT, then you will have to minus the dividend because so much of money is going out of the business, right? Okay. So ये दो adjustment आपको करने की जरूरत है. तो ये आपका कैश फ्लो है. आप सभी को मालूम है, हमने डिस्कस भी किया है कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट? एंड इसमें दो कंपोनेंट हैं, ये कंपनी के ऑपरेशन से है और ये कंपनी की चेंजेस इन करंट एसेट्स, चेंजेस इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों से है, राइट? सो बेसिकली नेट चेंजेस इन दी करंट वर्किंग कैपिटल. ये बाकी के हैं, आपको मालूम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके, ये फिर आपका कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? कैश फ्लो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज वी हैव डिस्कस्ड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका नेगेटिव कैश फ्लो होगा, और अगर आप एसेट्स को सेल कर रहे हो तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विल बी पॉजिटिव. एंड दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. यानी कि दो तरह के सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए, equity है और debt है, right? So in case of equity, generally you will have increase in the share capital, but sometimes you, as we discussed, you buy back your shares. Sometimes you do the redemption of, you have taken, let's say, redeemable preference share. तो अगर आपने redeemable preference share लिए हैं और आप उनको redeem कर रहे हो तो आपका cash flow from the financing activities कम हो जाएगा. Second is your debt related. सो ये अगर आपकी जो बोरिंग्स वगैरह हैं तो अगर बढ़ती हैं तो सोर्स ऑफ इनफ्लो होगा. नाउ हाउ टू इवैल्यूएट द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. शुड द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग. कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुड बी नेगेटिव सब्जेक्ट टू इकोनॉमी डूइंग गुड. एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मस्ट बी पॉजिटिव एंड इन अ गुड मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. यानी कि जब आप फाइनेंसिंग कर रहे हो तो इट मस्ट ऑलवेज बी इन अ गुड रेशियो ऑफ डेट इक्विटी. यानी जनरली जो लोगों का सोचना है वो ये है कि अगर आप 100 करोड़ की 200 करोड़ का कर्जा लेके आ रहे हो तो 100 करोड़ आपको इक्विटी करके डालना चाहिए, अदरवाइज योर बिजनेस बिकम रिस्की. ओके, सो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये भी स्किप कर रहा हूँ. ये अलग अलग मेथड है, वो आप सभी को मालूम होगा. एंड आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कम. ये भी ठीक है, ये भी ओके. ये आई जस्ट वांट टू ब्रिंग यू टू स्टेट टू द सिचुएशन वेयर वी आर मोर कंसर्न, एंड दैट इज
how to prepare the just give me a second. You can stop now.